Okay, guys, so good evening, everyone. So, this is our third session on fundamental analysis. So, in this session, we are talking about advanced fundamental analysis. And this is the session number 3 for advanced fundamental analysis. So, in the previous session, we have talked about fundamental analysis. We have talked about how to analyze the annual report of the company. We have also tried to understand the various methods of ratio analysis. Also, we have talked about the valuation methods as well. In the previous sessions of advanced fundamental analysis, session number 1 and 2, we also talked about sector wise financial ratios, that which ratios are beneficial for the banking sector, right? We also tried to cover a lot on various other sectors as well. And we also tried to understand some scientific indicators in fundamental analysis. We also tried to understand IPOs as well, how to value these new age IPOs. If you people want to know how to value these new age IPOs, there is a separate session on YouTube live only. You people can go through the series of College Dekho and watch that session. Okay. So in the yesterday's session, I was talking about insurance, right? As we have some different kinds of ratios for the banking sector, we have different kinds of ratios for the pharma sector, for the metal industry, for the IT industry, for the oil extraction companies. Similarly, we have different kind of ratios for insurance companies. All the previous ratios that we have understood, those are just the basic ratios. The applicability of those ratios is basically for all the sectors. But when you people are appearing for the corporate interviews for the BFSI sector, banking, financial services, and insurance sector, you need to have knowledge on these additional financial as well. Okay, so these things you need to know. So in the yesterday's session, we tried to analyze like some of the banking ratios as well. And in the session, which was the advanced fundamental analysis session number 1, I remember, we also talked about like more about the banking ratios. So if you people want to know more about the banking ratios, you people can watch the series on banking ratios on advanced fundamental analysis session number 1 and 2. Okay. So yesterday we stopped on insurance. We were talking about insurance in the yesterday's class. Okay. So let's continue with the point of insurance only. Yeah. So talking particularly about insurance, how to analyze the insurance industry, which metrics should be used to analyze the insurance industry. So these things you need to keep in mind, and these are the most important things. Okay. How to analyze the insurance industry. Just give me a second. I'll just connect it once again. There is some issue in connection. Yeah. See, in order to analyze a company which is into insurance, we have a large number of insurance companies. For example, the LIC, the Life Insurance Corporation of India. The different other banks have also forayed into the sector of insurance, be it your HDFC Life, you have the HDFC Ergo, the Max Bupa, you have Star Life Insurance, and like various banks as well, be it your Axis Bank or ICICI Bank or Kotak Mahindra Bank. All these banks are also providing services on insurance through different sectors and means. Okay. So how to analyze these companies and what kind of ratios are used to analyze this sector? The first most important ratio for which we can talk about is the claim settlement ratio. We have the claim settlement ratio. So what exactly is the claim settlement ratio? A basic example. An insurance company, what's the main task of an insurance company? That is to receive the premium and to provide their services in return when something wrong happens. Like, for example, if the insurance has been taken for the purpose of life and someone dies in the house, then that insurance or that amount or lump sum amount would be paid to that family. Same goes in case of health insurance as well. If you have taken health insurance, you might be paying a certain premium,
and premium is paid like on a monthly basis. Okay. If someone is ill at your place or someone gets hospitalized, then the insurance company would be paying that amount. So the main purpose of the insurance company is to get maximum premium and to provide their services to your home or to your family if something wrong happens. So one thing is quite clear. The main source of income for the insurance company is their premiums, right? Insurance company को अगर premium नहीं मिलेंगे तो they won't be working. ठीक है, तो business खत्म हो जाएगा. So in order to protect your life or in order to protect your health, to provide a lump sum amount, they charge you a premium. And उस premium का वो क्या करते हैं? Some amount of premium is kept like with themselves because कुछ like पैसा तो company के पास भी होना चाहिए. And some amount of your premium is invested into stock markets, into various kinds of instruments, be it equity, be it debt, be it some government securities, hybrid instruments. क्यों? अगर उनको कोई भी claim देना पड़ जाए, तो obviously apart from their own reserves, which like they have earned from the premium by us, हमने जो उनको प्रीमियम दिया है उससे जो उन्होंने पैसा कमाया है, apart from that they must also have a lump sum amount because only a single person has not taken insurance from them. Large number of people all over the country, all over the world have taken insurance from them. So they need to settle the claims for them as well. So a certain amount of your premium is invested into these assets, be it short-term assets or long-term assets and liquid assets as well. By liquid assets, I mean कि कोई lock-in period नहीं होता. अगर पैसा जल्दी निकालना पड़े तो पैसा they can withdraw from that fund. तो both the liquid assets and non-liquid में insurance companies अपना प्रीमियम लगाती हैं ताकि वहां से भी कुछ पैसा मिले एंड रिटर्न आए, ताकि जब लोगों के क्लेम सेटल करने हो दे हैव इनफ मनी. अब क्लेम सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इंश्योरेंस कंपनी को जितने क्लेम मिले हैं आर दे सेटलिंग दोज क्लेम्स और नॉट. जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, इफ a total of 500 people have taken insurance from a certain company. 500 people have taken insurance from a certain company. Then to how many people the insurance company is providing their services when something wrong happens? मतलब 100 में से कितने लोगों को अपना क्लेम मिल रहा है अगर कुछ भी गलत उनके साथ हो रहा है या उनकी फैमिली के साथ हो रहा है? उन 100 में से कितने लोगों को या उन 500 लोगों में से कितने लोगों को अपना क्लेम मिल रहा है? So let's take a simple example. हम 100 लोग लेके चलते हैं for simpler calculation. So 100 लोग हैं who are the customers of this insurance company, and 100 people have taken loan from this insurance company. Have taken insurance, not loan. Okay. अब इनमें से अगर 100 लोगों को प्रॉब्लम होती है over a certain period of time, then कितने लोगों का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल करा है? You have to see this ratio should be as high as possible. As high as possible. किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में you won't get 100 by 100 because no company settles claims. सारे लोगों का क्लेम सेटल नहीं करते because there are a large number of clauses as well, like which you need to understand while taking insurance. ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपनी डिजीजेस के बारे में नहीं बताते या कुछ पर्सनल इश्यूज के बारे में नहीं बताते एंड उन सब चीज़ों की वजह से समथिंग रॉन्ग हैपेंस एट देयर प्लेस. तो उन चीज़ों में इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गिव यू द lump sum for that. But so that's a personal reason. But apart from that, the main purpose of the insurance is to have premiums. Saving your life is the second purpose. ये सेम चीज़ मैंने बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बोली थी. Their first aim is to get as much commissions or interest payments from you, and service is the second thing. Same for the purpose of insurance. The first source of income is the premium. They want the maximum premium from you people. So in order to analyze these companies, you need to see कि 100 लोगों ने अगर इस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो कितनों का क्लेम सेटल हुआ है. Okay, so that you need to understand. And this should be greater than 75%. 75% से ऊपर अगर कंपनी क्लेम सेटल कर रही है, मतलब 100 में से 75 लोगों को अपना क्लेम मिल रहा है, so it is a good company. So that is a claim settlement ratio. These ratios are available on various websites, on the insurance portals as well. Okay. अब second आता है amount settlement ratio. Again, this is an important ratio.
Why this amount settlement ratio is important? Claim settlement ratio can be manipulated. How can this ratio can be like manipulated? हो सकता है कोई कंपनी 75/100 या 99/100 कर दे शो कि हमने 99 लोगों का क्लेम सेटल करा है. ओके, बट अमाउंट सेटलमेंट रेशियो it avoids all the manipulations if the company has used it in the claim settlement ratio. Okay, amount settlement में क्या होता है? अगर 100 लोग हैं, ठीक है, अगर उनमें से सबका क्लेम मान लो कि 1 करोड़ का था, ईच पर्सन हैड अ क्लेम ऑफ 1 करोड़. अगर कुछ भी गलत होता है, their family would be getting like 1 crore rupees. But instead of getting 1 crore, they just got 50 lakhs or 40 lakhs or 30 lakhs or nothing or just 1 rupees. अगर 1 रुपए भी 1 करोड़ के बदले फैमिली को दिया होगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तब भी बढ़ जाएगा. बिकॉज क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज जस्ट कैलकुलेटेड कितने लोगों का क्लेम सेटल हुआ है. वो ये नहीं बता रहा कि जितने का क्लेम उनको मिलना चाहिए था, अगर 100 करोड़ का क्लेम मिलना चाहिए था या 50 लाख का क्लेम मिलना चाहिए था, तो पूरा मिला है या नहीं. दैट इज वाई अ मोर बेटर इंडिकेटर टू एनालाइज दिस इंश्योरेंस कंपनी इज द अमाउंट सेटलमेंट रेशियो. बिकॉज क्लेम सेटलमेंट तो दिखाने के लिए किसी को वो 50 लाख की पॉलिसी होगी, दिल गिव 20 lakhs, दिल गिव 5 lakhs, बट दैट पर्सन वोंट बी सेटिस्फाइड, राइट. अगर 50 लाख की पॉलिसी कराई है तो 5 लाख क्यों मिल रहा है? सो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, इफ यू वांट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि सबके क्लेम्स तो मिले हैं बट पूरा पैसा मिला भी है नहीं, फॉर दैट यू हैव द अमाउंट सेटलमेंट रेशियो. ओके, सो दिस विल टेल यू 100 अगर था तो उनमें से 99 या 98 कितने लोगों को अपना पूरा पैसा मिला है. ओके, एंड दिस रेशियो शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, as high as possible. Okay, apart from settling the claims of these people, they're also getting their full amount as well. So claim settlement ratio and the amount settlement ratio is one of the best things that you should go. Okay. Then third one, you have the combined ratio. And that is completely from the insurance company's point of view. Combined ratio. अब कंबाइंड रेशियो में क्या होता है? इन डिनोमिनेटर यू हैव द प्रीमियम्स रिसीव्ड, जो इंश्योरेंस कंपनी जो हमसे कमाती है, एंड न्यूमरेटर में यू हैव द प्रीमियम्स पेड. नाउ लुक इट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तुम इंश्योरेंस कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो. यू आर नॉट लुकिंग फ्रॉम योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. If you look it from your personal point of view, like you people would always be biased and तुमको like हमेशा ये सेम चीज चाहिए होगी कि प्रीमियम हम कम से कम पे करें and claim हमको ज्यादा से ज्यादा मिले. But in this case, you are analyzing the company's profitability. You are analyzing the insurance company's sustainability and not yours. Okay, so when we try to analyze the insurance company, obviously we want कि insurance company तब ही profitable है. Insurance company will do better only when it is like receiving the maximum premium. Okay, so this value of the premium like received should be as high as possible, right? And mathematically, agar denominator would be as high as possible, so this ratio would be lower. Okay, this ratio would be lower. So this combined ratio from the company's point of view should be as low as possible. मतलब कि प्रीमियम जो कंपनी को मिले, they should be as high as possible, but the premium that the company is paying should be as low as possible. If we look at from the company's point of view, अगर तुम personal point of view से देखोगे, so this ratio should be as high as possible, because you always want कि premium हमें कम pay करना पड़े and पैसा हमको ज्यादा मिले. But ideally, it is not possible. If you are analyzing the company or the business of insurance, their profitability is analyzed more or less on the basis of उनको कितना प्रीमियम मिला है. Okay, so this ratio should be as low as possible. Okay, then एक चीज को ध्यान रखो, why these insurance companies have a greater scope in future. Obviously, the one reason is because of COVID, because everyone is now taking policies because of COVID. And you have like specific like policies as well, be it your corona coverage and corona like rakshak is there.
So like all these policies are there. इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो एंड इंश्योरेंस डेंसिटी रेशियो इज वेरी लो. दैट यू नीड टू नो. ओके, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो एंड इंश्योरेंस डेंसिटी रेशियो. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो क्या होता है? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इट इज नथिंग बट कि कितने प्रीमियम्स मिल रहे हैं जो लाइक इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट कर रही है, डिवाइडेड बाय द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री. ये बहुत लो है. ये बहुत लो है. लो क्यों है? बिकॉज जीडीपी हमारी ज्यादा है, ठीक है, बट प्रीमियम्स जो हम पे कर रहे हैं वो बहुत कम है. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीमियम्स वी आर पेइंग लेस. इसका मेन रीजन ये है, पीपल हैव नॉट टेकन इंश्योरेंस पॉलिसीज. दे हैव नॉट टेकन लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नीदर दे हैव टेकन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. कोई भी पॉलिसी उन्होंने नहीं ली है. एंड दैट इज व्हाई दिस रेशियो इज वेरी लो. एंड द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू मेक दिस रेशियो हाई, as high as possible. And when you talk about the insurance density ratio, you have the insurance density ratio. It is the premium जो इंश्योरेंस कंपनी कमा रही है by the population of the country. मतलब कि कितने लोग रह रहे हैं. Again, this ratio is very low. This ratio is not low because लोग प्रीमियम या तो पे नहीं करते या बहुत कम पे करते हैं. The major reason is because people have neither taken life insurance nor health insurance. अगर लोगों ने इंश्योरेंस लिया ही नहीं होगा तो प्रीमियम आएगा कहाँ से? And that is the main reason why the government and these companies of insurance are insisting you to take life insurance and health insurance. Because life and health insurance is mostly taken by the middle class family, ठीक है, because they have their savings and they do not have a very high income. Okay. Whereas the rich people who are earning in like millions and billions, अगर वो like insurance policy ना भी लें तो अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो they have certain money for that. ठीक है. But like specifically talking about the middle class people and the upper middle class people, they need this insurance cover because if something wrong happens, their savings are also not enough for that. Okay. That is why the government and the companies of insurance are targeting the middle class people and the upper middle class people to the maximum extent. Okay. So अगर अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो लो जाकर. ठीक है. So that was about the insurance. Okay. Some ratios on like insurance. एक चीज I want to like discuss with you. I want to discuss with you about the rights issue. You might have heard that companies issue the rights issue. So rights issue कोई complicated चीज नहीं है. It is just the existing shareholders of the company, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स पहले से खरीदे हुए हैं. They get an offer to purchase additional shares of that company at a lower price. The existing shareholders of the company, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, they get an offer to purchase additional shares at a lower price. And this offer is only available to those people जो existing shareholders हैं. ठीक है. जिसके पास कंपनी के शेयर्स नहीं हैं, that person cannot exercise this option. Okay. Again, अब राइट इशू में सबको लगता है कि जिनके पास शेयर्स होते हैं, they feel at a lower price we are getting more shares. अगर मान लो पहले मतलब कि बिफोर द इशू अगर हमें 100 रुपए का शेयर मिल रहा था, if the company announces a right issue, we are getting 100 rupees का share at 25 rupees. So the existing shareholders of the company will think, पहले 100 रुपए में हम कम शेयर्स खरीद पा रहे थे, अब तो शेयर 25 का हो गया तो और खरीद लो. This is a very good tactic by the companies. ठीक है. तो राइट इशू देख के देखो, ऐसा ना हो कि आफ्टर द राइट इशू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी गेट्स low, okay, or the growth of the company gets reduced. And the growth of the company as measured by the EPS, the earning per share, which we talked about in the ratio analysis session. ऐसा ना हो कि राइट्स इशू की वजह से कंपनी का EPS कम हो जाए. Okay, because this is a way of manipulating the existing shareholders as well. अगर EPS कम नहीं हो रहा, then the right issue is very good. Apply for the issue. But अगर after the analysis you people think that the EPS is going down, then do not apply for such a right issue. Okay, so the right issue is on
आर लाइक नॉट ऑलवेज गुड, एंड लोगों को लगता है कि जो शेयर्स हम पहले लाइक हम महंगे में ले रहे थे तो अब हमको बहुत सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, एंड सस्ती चीजें लाइक सबको बहुत पसंद होती हैं। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अगर मान लो कि कंपनी ने 3:1 का राइट इशू करा, मतलब फॉर एवरी वन शेयर, मतलब अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का एक शेयर है तो एक शेयर के अगेंस्ट लाइक दे विल बी गेटिंग 3 शेयर्स। मतलब अगर एक शेयर है तो 3 शेयर मिलेगा, 2 शेयर है तो 6 मिलेंगे, 3 है तो 9 मिलेंगे। फॉर एवरी वन शेयर विच द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी पोजेस, दैट पर्सन और दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वुड बी गेटिंग एडिशनल 3 शेयर्स। ओके, सो मान के चलो अगर नंबर ऑफ शेयर्स थे 50, द ईपीएस वॉज 10, the total earnings were 500, the share price like before the announcement of the right issue was 100. So total investment कितनी होगी, share price into 500, 100 into 500, 5,000 rupees. Okay, अब after the right issue, if the right issue was applied, मतलब if you subscribe to that issue, अब तुम्हारे पास अगर 50 शेयर्स थे एंड एक के बदले 3 मिल रहे हैं तो तुम्हारे पास एडिशनल कितने हो जाएंगे, 150 शेयर्स। एक के बदले 3 मिल रहा है तो 50 के बदले 150 मिलेगा, राइट। सो नाउ यू कैन बाय 150 एडिशनल शेयर्स। ओके, एक के बदले 3, 50 के बदले 150, 150, 150 आर द एडिशनल शेयर्स दैट यू हैव बॉट। ओके, नाउ 150 बीइंग द एडिशनल शेयर्स, जो पुराने शेयर्स खरीदे थे वो थे 50, 50 the older shares, the earlier shares, plus 150, the additional shares. 150 plus 50, 200. So now you have total 200 shares. Earnings remain same. शेयर प्राइस कम हो गया। अब शेयर प्राइस कम क्यों होगा, जब मार्केट में शेयर्स ज्यादा होते हैं and when the liquidity of the shares increases, the share price comes down. Okay, so we estimated that from 100 the share price come down to like 25 rupees. ठीक है, क्योंकि अगर 3 भागों में हो रहा है तो अगर हम देखें अराउंड 33 रुपीज का होना चाहिए शेयर। अगर हम 100 को बाय 3 भी करेंगे अराउंड 33, बट फॉर सिंपलर कैलकुलेशन लेट्स टेक इट टू अराउंड 25। सो 1/3 इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। ऐसा नहीं कि अगर 3 बारी हो रहा है तो दैट वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 3। ओके, हो सकता है 33 के बजाय 30 पे हो सकता है 33 के बजाय 40 पे हो सकता है 100 के बजाय 20 पे हो। दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी पीपल अप्लाई। जितने लोग अप्लाई करेंगे उतने कंपनी को एडिशनल शेयर्स बनाने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट द प्राइस वुड कम डाउन। ओके, 25 ईपीएस कम हो गया। ईपीएस इज नथिंग बट योर टोटल अर्निंग्स, जितनी भी तुम्हारी अर्निंग्स कंपनी की हुई हैं, द नेट इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। टोटल अर्निंग्स 500 थी, यहां देखो 500, अब शेयर्स हो गए 50 से 200। इसकी वजह से योर ईपीएस हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ईपीएस इज द फिगर इन डिनोमिनेटर, एंड जितने भी शेयर्स बढ़ते रहेंगे योर रेशियो विल कम लेस, रेशियो तुम्हारा कम से कम होता रहेगा। ईपीएस 10 की जगह 2.5 हो गया। शुड वी अप्लाई फॉर दिस राइट्स इशू? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर दिस राइट इशू, कंपनी का प्राइस तो कम हो ही रहा है बट ईपीएस भी कम हो रहा है। अगर कंपनी का प्राइस कम हो रहा होता बट ईपीएस बढ़ रहा होता तो फिर भी हम सोच सकते थे। ओके, so before going for this rights issue, try to understand this rights issue should not dilute the EPS of the company. Growth कम नहीं होनी चाहिए। Okay, so that is the right issue. For every one share 3:1 का मतलब है for every one share you are getting additional 3 shares. Okay, so that was about the rights issue. Now एक और चीज होती है, we have, देखो अगर हम राइट इशू की बात कर ही रहे हैं, we have one more thing, that is the stock split. ठीक है, I'll just present the whiteboard once again. Yeah, stock split. Stock split. Stock split मान लो अगर रेशियो दिया हुआ लाइक 1:5। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है अगर एक शेयर है, उस एक शेयर को दे हैव डिवाइडेड इनटू लाइक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स।
अगर 1:5 का स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो इट मीन्स दैट वन शेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 शेयर्स. फॉर एवरी वन शेयर यू हैव 5 शेयर्स नाउ. अब इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखना, इसमें 1:5 का मतलब ये नहीं है कि 5 के बदले हो रहा है 1. इट इज 1 के बदले हो रहा है 5. बट इन राइट इशू इट वॉज उल्टा. You had like 1:3 or 3:1. In case of right issue, you had 3:1. तो इसका मतलब था for every one share तुमको 3 मिल रहे हैं. ठीक है. So just make note of the difference. But in 1:5 stock split, where one share is getting divided into 5. Okay. So let's take a very simple example for that. Okay. So just in case before the right issue, the number of shares were 100. And the price per share was 300 rupees. So your total investment comes out to be 30,000 rupees. 100 shares थे मार्केट में. That was before the stock split. 300 का प्राइस था. ठीक है. टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 30,000. That was the number of shares in market and this was price. अगर कंपनी बोल रही है कि 1:5 का आई एम अनाउंसिंग द स्टॉक स्प्लिट, इट मींस वन शेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5. तो अगर 100 शेयर्स थे तो मार्केट में लाइक 500 शेयर हो जाएंगे. एंड अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है तो प्राइस भी कम होगा. एंड प्राइस कितने से कम होगा? जितने से शेयर्स बढ़े हैं. तो दिस 300 वुड बी लाइक डिवाइडेड बाय 5. 60 हो जाएगा प्राइस. जिस अमाउंट से 100 को मल्टीप्लाई करा है उसी अमाउंट से जस्ट डिवाइड द प्राइस, राइट. बट इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन सेम. टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी सेम रहनी है, बस शेयर्स तुम्हारे पास हो जाएंगे ज्यादा एंड प्राइस कम हो जाएगा. ठीक है. इवन देयर वुड बी नो चेंज इन द बैलेंस शीट. अगर मान लो कि 10 करोड़ के शेयर तुम्हारी बैलेंस शीट में थे, ओके, और मान लो कि 1 करोड़ शेयर थे तुम्हारी बैलेंस शीट में. 1 करोड़ शेयर्स वर देयर इन बैलेंस शीट और फेस वैल्यू ऑफ 10. तो अब 1 करोड़ के शेयर्स हो जाएंगे, मतलब कि 5 करोड़ हो जाएंगे शेयर्स. एंड फेस वैल्यू उनकी हो जाएगी 10/2, सॉरी 10/5. तो अमाउंट सेम ही रहना है 10 करोड़. पहले कंपनी के पास शेयर्स थे 1 करोड़ के ऑफ 10 रुपीज की फेस वैल्यू, राइट. अब 5 का हुआ है स्टॉक स्प्लिट, तो 1 करोड़ की जगह कंपनी में 5 करोड़ हो जाएंगे शेयर्स. 5 करोड़ 5, बट प्राइस भी तो कम होगा जितने से शेयर्स बढ़े हैं. 2 रुपीज का शेयर हो जाएगा, 5 हो जाता है 10 करोड़. तो दैट इज योर स्टॉक स्प्लिट. अब एक चीज होती है कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी होती है. रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है कि अगर 1:5 का था तो तुम्हारा हो जाएगा 5:1. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 शेयर्स थे तुम्हारे पास, अब नाउ दे लाइक कंप्राइज ऑल दीज शेयर्स एंड मेक इट इनटू जस्ट वन शेयर. स्टॉक स्प्लिट में क्या हुआ था? 1 की जगह 5 कर दिए थे. अब रिवर्स में क्या होगा? 5 की जगह 1 कर देंगे. तो ऑल दीज कैलकुलेशन विल गो इन अ रिवर्स बैकवर्ड्स. वापस शेयर्स हो जाएंगे 100, प्राइस 60 से 300 हो जाएगा, बट टोटल इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन सेम. So that is one thing you need to know. Okay. So that was about like when we talk about the concept of stock split. Okay. एक और चीज होती है, we have bonus issues. बोनस. कंपनीज कभी कभार लाइक बोनस इशू भी करती हैं. अब बोनस इशू का फिर इंटरप्रिटेशन जो है इट्स सेम एज द राइट इशू उल्टा. फॉर एवरी वन शेयर दैट यू हैव, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए है ये भी, एंड बाहर के लोग नहीं आ सकते. 1 शेयर आपके पास है, उसके बदले यू विल गेट 2 शेयर्स. फॉर एवरी वन शेयर दैट योर कंपनी हैज, यू विल बी गेटिंग 2 शेयर्स फॉर इट. अगर 1 है तो 2 मिलेगा, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 9 है तो 18. ठीक है. मान लो कि बिफोर बोनस, बोनस से पहले कंपनी हैड 100 शेयर्स ऑफ 300 प्राइस. ठीक है. अगेन 30,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई. अब एडिशनल मिल रहे हैं इसे 2 शेयर, मतलब कि 200 मिलेंगे एक्स्ट्रा इसको. ठीक है. अब प्राइस भी कम हो जाएगा बिकॉज टोटल शेयर्स इसके पास आ गए हैं 300. तो
हम इसका प्राइस भी कम कर देते हैं बाई 3, 100 रुपए, इफ यू वांट, बिकॉज बोनस है तो प्राइस भी कम होना है, दैट वन थिंग यू नीड टू नो। 100 है, 100 बोनस करा था, 300 का प्राइस था, मेक नोट ऑफ दिस थिंग, नंबर ऑफ शेयर्स वर 100, ठीक है। 300 का your price now, additional 200 shares have been issued, you have total 300 shares with you, total 300, right? Price is 100, your investment again goes on to be same, 2:1 का इशू हुआ है, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है कि बैलेंस शीट पे क्या असर आता है। मान लो बैलेंस शीट पे बिफोर यू हैड 10 करोड़ के शेयर्स एंड 50 के रिजर्व्स, शेयर कैपिटल तुम्हारी 10 करोड़ की थी एंड रिजर्व्स वर ऑफ 50 करोड़। मेक नोट ऑफ वन थिंग, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्रॉम रिजर्व्स। हमारे पास 100 शेयर्स थे 300 रुपए के, 200 एक्स्ट्रा इशू हुए, टोटल हमारे पास 300 हो गए थे। तो एक्स्ट्रा 200 इशू हुए हैं, दे आर फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, बोनस आर इशूड फ्रॉम रिजर्व्स। पहले हमारी कैपिटल 60 थी, तो आफ्टर द बोनस इशू कोई चेंज आएगा या नहीं? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 10 करोड़ पहले था, 20 हमने और एक्स्ट्रा कर दिए इशू, 30 वापस ये हो गया, बट ये 20 50 में से ही तो गए हैं, 50 माइनस 20, दैट यू नीड टू नो, 30, टोटल तब भी 60 रहना, ठीक है। 10 करोड़ शेयर्स थे कंपनी के पास एंड 50 करोड़ वॉज द रिजर्व्स। आउट ऑफ दिस 50 करोड़ द कंपनी हैज इशूड बोनस, बोनस हमेशा इन रिजर्व से इशू होगा, एंड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। तो इफ द कंपनी हैड 10 करोड़ शेयर्स एंड 20 करोड़ एक्स्ट्रा वर गिवन, now the share capital turned out to be 30 crores, 10 plus 20, बट जो 20 एडिशनल इशू हुए हैं वो इन 50 में से तो हुआ है, तो 50 माइनस 20 30, योर शेयर कैपिटल रिमेन सेम 60, उसमें शेयर कैपिटल सेम रहती है, ओके। एंड ऑल्सो योर फेस वैल्यू ऑल्सो रिमेन्स द सेम, इन बोनस इशू फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, इन स्टॉक स्प्लिट योर फेस वैल्यू चेंजेस। हमारी जो फेस वैल्यू वो 10 से हो गई थी 2, राइट, बट इसमें कोई फेस वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला। तो मेक नोट ऑफ वन थिंग, इन बोनस देयर इज नो चेंज इन फेस वैल्यू, okay, but in stock split there is a change in face value, right? This was like some of the most important topics that you should know. So in the next class, which will be happening on Monday, we'll be starting with the series of valuations, okay, though we have talked about like valuations in fundamental analysis, but we'll be talking about the concept of valuation in more detail from the Monday session. So valuation, advanced valuation session number 1 on Monday, okay, so make note of that thing. So that is all for today. Good.